next is Alexander Wang. Cool. Hey everyone, I'm Alex. What are you doing for Waymo, Cruise, and Uber? इसका नाम है अलेक्जेंडर वांग। 19 साल की उम्र में ये बंदा एक कंपनी फाउंड करता है, उसका नाम है स्केल AI। ऐसा ये बंदा क्या 19 साल की उम्र में जो बड़े साइंटिस्ट अपनी पूरा जिंदगी में नहीं कर पाते हैं। Over $600 million to date. Tell us a little bit about Scale AI. Scale, we accelerate the development of artificial intelligence. 25 साल की उम्र में बंदा दुनिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनर बन चुका है। How did you get here? Unfortunately, I can't really comment on that, but But you have a view. I try to convince people to slow down AI. I tried for years. And in fact, I don't think that Homo sapiens has much of a future left. We are probably one of the last generations of Homo sapiens. Nobody listened. Nobody listened. No one. I'm probably going to be dead and gone, and I'll probably be thankful for it when all this shit comes to fruition. This scares me to death. आप मानो या ना मानो, हमारे हर एक बिहेवियर पे एल्गोरिथम कंट्रोल करता है। जैसे कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लगाना है, कहाँ पर जाना है, यहाँ तक कि किसे हमें डेट करना है, ये पूरा एल्गोरिथम कंट्रोल करता है। Confusing because it's simultaneous utopia and dystopia. कहने को तो ये सर्विस पूरा फ्री है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये पूरा फ्री है। लेकिन जब ये कंपनी पूरा फ्री है तो कंपनी का वैल्यूएशन कैसे बढ़ रहा है? Should explainability be required? Yes or no? this is a really important question. Again, जब ये कंपनी पूरा फ्री है, इस कंपनी को कौन पे कर रहा है? क्या काम करता है स्केल AI जो इस बंदे का 25 साल की उम्र में पूरा यंगेस्ट बिलियनर बना दिया है? Are we trying to connect people so ultimately they will leave the screens and go and play football or pick up garbage? Or are we trying to keep them as long as possible on the screens? जस्ट सपोज कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन में आपका फ्रेंड आपको टैग किया होता है, तो क्या आप लोग उस फोटो को आप लोग ओपन नहीं करोगे? श्योर आप लोग उस फोटो को ओपन करोगे ही करोगे। तो ऐसे ही छोटे ट्रिक के हेल्प से सोशल मीडिया हमें पूरा कंट्रोल कर रहा है। We now have markets that trade in human futures at scale. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Exactly what image you stop and look at, for how long you look at it. Oh yeah, seriously, for how long you look at it. We can use it to create paradise or hell. It's still up to us.